आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर इश्तियाक अहमद। प्रोफेसर साहब पॉलिटिकल साइंस के एमेरिटस प्रोफेसर हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर साहब विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में। और प्रोफेसर साहब आजकल एडिटर इन चीफ हैं लिबरल आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज इंटरनेशनल जर्नल के। आज हम प्रोफेसर साहब से बात करेंगे पॉलिटिक्स और उसके बेसिक्स के बारे में। प्रोफेसर साहब, मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये रखना चाहूंगा कि व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स होती क्या है? ये तो है द फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिटिक्स? Politics is a study of power. Who gets what, how much, and why. This is what politics is all about. Status किसी का क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रोडक्ट की वो कितनी किस तरह शेयर होगी, हाँ ये है बेसिकली द निटी ग्रिटी ऑफ पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स के बगैर शायद एक लार्ज स्केल सोसाइटी मुमकिन ही नहीं है। एक ट्राइबल सोसाइटी में भी एक पॉलिटिक्स की बुनियाद होती है, अगर वो कहीं सेटल्ड हो या नोमैडिक भी हो तो वहां पे भी देयर इज सम लीडर विच एवरीबॉडी फॉलोस। तो जो लीडर है उसके पास चंद प्रिविलेज, चंद प्रीरोगेटिव हमेशा ही होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ये पॉलिटिक्स इज ए स्टडी ऑफ power relations and the consequences of who is in power and who is out of power, how to empower power, यानी इस किस्म की जो ना concerns हैं, that is politics. एक और भी कहा जाता है कि the politics is the study of the state. This is another way of looking at it. What does the state do? It lays down the basic rules, the basic गेम जो है ना, अकॉर्डिंग टू विच सोसाइटीज इंटरएक्शन विल बी रेगुलेटेड। कोर्ट्स होती हैं, एग्जेक्टिव होती है, और some sort of laws are there. So all this then is the study of the state. Legitimate power, illegitimate power भी एक बात हो सकती है. Who is exercising legitimate power? Who's not exercising it? What is a coup? What is usurping power? ये सारी चीजें जो है ना, I would say it's the study of the state. Greeks ने इसे study of the state कहा है politics को. जी सर। okay? आज हम फोकस करना ही चाहेंगे सर सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल का क्या कहना था सर? हाँ सर, अगर आप सोक्रेटिस से शुरू कर सके, इस सोक्रेटिस का क्या कहना था पॉलिटिक्स पे? सोक्रेटिस का तो बेसिकली अबाउट सोक्रेटिस वी डोंट नो मच, क्योंकि उन्होंने कोई लिखी हुई तो उनकी चीज नहीं है. व्हाट वी नो अबाउट सोक्रेटिस इज फ्रॉम प्लेटो, रिपब्लिक के अंदर, ठीक है. तो उसको प्लेटो ने द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ हिज टाइम कहा है. आई थिंक सोक्रेटिस नोन फॉर हिज पैराडॉक्सेस. एक क्लासिक जो है पैराडॉक्स तो ये है ना कि somebody came and said to Socrates that some people are claiming that they are more learned than Socrates. So Socrates says that I am not learned, but if they are saying this, then it means they don't know enough to make such a claim. So you see, that is how he presents a paradox. And then the classic case once again that he was accused of corrupting the youth. शायद वो जंग के अंदर जो Peloponnesian wars में I think he was discouraging people to go, and I don't know the details, you can look at, but he was accused of teaching the youth of Athens to defy those in power. But when he was sentenced to that, and that is the ultimate paradox, his followers said that we can help you escape. But he wouldn't do that. He accepted the laws and drank the hemlock and died. Yes, sir. So this is another paradox,
that you are critical of the state and still you don't want to violate the laws or the judgment passed by people you don't really have much respect for. And Plato then out of this argued that democracy is a disaster because Athenian democracy passed a death sentence on the most learned man of the time. So democracy then he thinks is the rule of the uninstructed, uninformed, irresponsible, and so on. So I think Socrates in that sense is the overall inspirer of logic, what is known as the dialectic, which Plato then uses in the Republic. But about him, we don't know much in terms of his own writings. ठीक है? सर एक चीज पूछना था मेरे को, जैसे हम पॉलिटिक्स आपने डिफाइन किया, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? ये गवर्नेंस तो वर्ड बाद में आया है जब उन्होंने गवर्नमेंट और गवर्नेंस में थोड़ा सा फर्क डाला है. पहले उसे एडमिनिस्ट्रेशन ही कहते थे, लेकिन गवर्नेंस मीन्स how people have governed in a certain context, while the government governs. ठीक है ना? Good governance, bad governance is how a government has managed its responsibilities. So that's governance. हाँ जी बोले. जैसे सर हम सोक्रेटिक मेथड की बात करते हैं, जी. तो सर सोक्रेटिक मेथड होता क्या है, और अगर हमें अभी प्रेजेंटली इसको अगर अपने कंट्री में अप्लाई करना हो कि हमारे गवर्नमेंट को वो करने के लिए, तो कैसे अप्लाई करना चाहिए हमें सोक्रेटिक मेथड? सोक्रेटिक मेथड तो वही है ना डायलेक्टिक का, जो प्लेटो ने हमें बताया है. And the method, the way I understand the dialectic is that you look at an argument and find what is contradictory in it until you exhaust all contradictions and reach an elegant statement. तो Socratic method जो है ये तो philosophers के लिए ये सारी चीजें हैं. It's not so much to do with day-to-day politics. I don't think there you have Aristotle, the more observant of what is possible. The philosophical view जो Socrates की और जो Plato present करता है, वो तो यही है कि the ideal क्या होना चाहिए. So I think most states adhere to Aristotle, and when they adhere to the ideal situation, they either they create from a utopia what is known as the dystopia, उसको opposite बना देते हैं. Because when you seek perfection, अब देखो ना लॉजिक के अंदर तो perfection आप you can always exhaust the false from the true, but that's not how society really functions. So that's the way I would look at the Socratic method as explained by Plato, to eliminate contradictions and to finally उसमें ये होता है ना कि dialectics is a combination of what is right and what is wrong, and that tension creates a new situation, and you keep on eliminating until you say that this statement is now elegant and a universal claim, जो भी हो सकता है. समझ गए आप? So how would that be applied to the situation of India? I don't know. वहाँ पे Socratic method तो I don't think is very relevant at all. वो कभी भी नहीं हुआ real politics में. वो तो academics के लिए, intellectuals के लिए एक framework है how to approach society. ठीक है? जी सर. यस सर. सर आपने सोक्रेटिक मेथड को कहा ना डायलेक्टिक का तरीका है, तो सर बाद में इसे हेगल ने और मार्क्स ने भी यूज किया था ना सर सोसाइटी के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस को रिमूव करने के लिए. That's right. असल में dialectics once the Greeks had started using it, वो रोमन में भी सिसरो भी इस्तेमाल करते रहे. So this has been part of, I think, what is known as high philosophy. All along people have been using it. When it comes to Hegel, I would say, Hegel's own claim was that he was the Aristotle of his times.
But I have always argued that actually he is Platonian, because his argument is that there is a universal idea. The universal idea, mysteriously chooses a people for its manifestation. And that manifestation then moves from one to another. For example, he thought of the Greeks, then of the Romans, then about, I think, he thought of the British, and then of the Germans. Hegel ka ye soch tha ke the German people would lead the world forward because they have the universal idea. And his universal idea somehow ends up with the national state. For him, ultimate perfection is societies being organized in national states. And the national state then has three levels. One is universal altruism, the public, the general good represented by the state. Then there is the civil society, which represents individual egoism. And then there you have the family, which is private altruism. So the contradiction between the two are always mediated by these three levels of society. That's what he's arguing. And the state then has the highest position, because while all this is going on, you and I are pursuing our individual egoism in the market. At home, we are privately altruistic. Your fathers have sacrificed for you to get a good education. You have helped your brothers and sisters. When your mother is in trouble, you feel that a lot and you are willing to make sacrifices. So that is, at the private level, we can be altruistic, while simultaneously, when you go out to buy something, he says that each one of us tries to get the best bargain, and we are egoistic. All this is then regulated. This creates the tensions between the private and the public. And at the level of the state, then these contradictions are handled in terms of overriding national interest and what is the public good. Marx, then, if you want to look at the dialectic, he borrowed this idea from Hegel, but added that of Feuerbach to it. Feuerbach talked about materialism being the force which changes society. Ideas for him were really reducible to what was happening at the material level. Marx then thinks that the material and the ideational level dialectically interact with one another, although in the last instance, it is the material level which determines the outcome of this dialectical interaction. Things like this. So dialectics is, I would say, something which appeals to all of us in our own ways when we are arguing, isn't it? When you want to win an argument, what do? You look at the opponent's weaknesses, the contradictions, and confront him. So that's what you and I are doing all the time. Okay? Yes. Sir, Socrates का एक और चीज कहना था कि if you are doing something wrong, then the only reason you can be doing it is out of ignorance. मतलब उनका मानना था कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो यानी कि आपको true knowledge है ही नहीं. सर, ये आइडियलिस्ट सिचुएशन नहीं है? लोग सही जानते हुए भी गलत करते नहीं है क्या दुनिया में? असल में वही तो है ना, प्लेटो ने जब उसमें डिफाइन किया है कि द फिलोसोफर किंग इज सॉक्रेटिस, एंड इफ द फिलोसोफर नोज everything and his knowledge is perfect, then he cannot be in error. But Aristotle questioned this and said, is it possible for any one human being to have such perfect knowledge? If you find someone, then of course you should obey all his behests. But more probable is that you won't find people with all perfect knowledge. Therefore, let's go for what is possible. So Socrates की जो ये है ना कि जो परफेक्ट नॉलेज वाला है वो गलती नहीं करेगा,
अगर आप ग्रांट कर दें कि किसी के पास परफेक्ट नॉलेज है तो वो फिर गलती कैसे करेगा? Yes. ये सारी रिलीजन और ऑलमाइटी गॉड इज एक्चुअली प्लेटोज आइडिया। Yes. ऑलमाइटी गॉड को अगर आप प्लेटो के हवाले से लें, सोक्रेटिस प्लेटो, आई मीन सोक्रेटिस इज प्लेटो टेलिंग अस अबाउट सोक्रेटिस, देन मुसलमानों में ये डिस्कशन हुई, कैथलिक्स में हुई, पता नहीं हिंदुओं में किस तरह हुई होगी, आई एम श्योर ये डिस्कशंस आपके लर्नेड लोगों में भी हुई होगी कि इफ देयर इज परफेक्ट नॉलेज then who is in error? So I get up and commit murder. It is because my knowledge is imperfect. But if God knows that I'm going to commit this murder, and He has perfect knowledge of my intentions and my doings, then where lies the responsibility? यानी इस किस्म की बातें you can bring into this idea of one who only the ignorant commit errors, you know. Obviously that is true, but the question would be, is there anyone who is not lacking in some knowledge? So how do you ensure perfection? So people don't do it with individuals, they make God be perfect in every sense of the word. And Plato talked about the philosopher king attaining this. सर मैं मोटिवेशन कर रहा था सर। गवर्नेंस में, स्टेट में बहुत सारे लोगों को पता होता है ना कि सही क्या किया जाना चाहिए, वो तब भी वो नहीं करते। मैं इस वाले में बोल रहा था सर, परफेक्ट नॉलेज नहीं हो सकती है तो मतलब obvious है। जी वैसे कह रहा था मोटिवेशन भी तो होते हैं ना सर, लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट क्लैश करते हैं सही चीज के साथ, तब उसकी बात कर रहा था। हाँ ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। तो वहां पे यही है ना कि हाउ शुड वी डील विद दिस, कि उन्हें पता भी होता है फिर भी वो करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि वो उनके इंटरेस्ट होते हैं। ये तो एरिस्टोटल ने आर्ग्यू किया है ना जी जी जी। कि हर सोसाइटी में इंटरेस्ट का क्लैश होता है, इसीलिए वो एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के हक में है, जिसमें एक लर्नड आपका रूलर भी हो, एरिस्टोक्रेसी भी हो, मिडिल क्लास भी हो, ताकि ईच क्लास balances the other one. The only class he doesn't want to empower are the poor. He thinks that the poor are a majority, and since they have no stake, they have no interest to defend, they would make policies which would be undermining the very basis of society, revolutionary ideas, things like this. Yes. So people knowing this and doing this, Marx would say, makes a lot of sense. It's the class interest which is important and not just information that you have. What is information worth if not to protect and promote your interest? So who cares? Knowledge होते हुए भी लोग करते हैं। Yesterday I was seeing a film, इंडिया पे ही बनी है, अबाउट ए कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड गाड़ी लोहार, हु वर राणा प्रताप को जब हराया अकबर ने तो देवर हिज लोहार्स, तो उन्होंने वो छोड़ ही दिया, सेइंग के वी विल नेवर कम बैक बिकॉज आवर रूलर वाज डिफीटेड अंटिल द मुगल्स आर ड्रिवन आउट. तो वन ऑफ योर एक्ट्रेसेस देन बिकम्स अ रिपोर्टर, and she went and talked to these people, and then these lohars, they are always on the move, and they live under very, very extreme poverty, insecurity, and so on. They don't have water, they don't have a proper shelter, and so on. So we learn that she goes and meets the ministers, and the ministers का टेलीफोन कॉल, कल तक पानी वहां पे दे दिया जाए, and this poor girl accepts it, come back, and then she visits these people a few more times, and no water has been delivered. So this man knows, he makes a commitment, but who cares? The gadi lohars are dispensable.
they have no voting strength, they have no local influence. So you make a promise and you don't keep it. That is what politics is all about. Who will get how much and why and how. सर पॉलिटिक्स हम लोगों को इतना इम्पैक्ट करता है, सर पॉलिटिक्स और एथिक्स के बीच में मतलब सर क्या रिलेशन होना चाहिए और कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगे? पॉलिटिक्स और एथिक्स? यस सर। देखो यार, एथिक्स ही तो लाए गए हैं ना, ये जितने रूल्स हैं, पार्लियामेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ पावर्स, यू नो, पावर शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन प्लेस। कुछ लोग तो कहते हैं मोनोपोली भी नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में भी, वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किसी तरीके से फेयर होनी चाहिए। हाँ जी, तो ऑल दिस इज अबाउट पॉलिटिक्स। Do I get your question correctly? Yani, ethics is always an attempt to limit the abuse of power. But whether that is successful all the time, most of the time, is an empirical question. Okay? Yes, sir. I'll give you an example. You know, in one of the elections in Sweden, the conservative parties, you know, came to power after the Social Democrats, and 3 of them were found to have employed Eastern Europeans without proper work permit at home to take care of their children. And this information was enough to make all 3 resign. Now, here you have a very strong question of ethics applying to the ministers. I don't think this applies at all in Pakistan. India का आप मुझसे बेहतर जानते हैं how much of these ethics really restrain the politicians. So it's all a matter of empirical study. Which society is more ethical than others in politics or in any other social relations? हाँ जी, लाइक से मैं इस सेंस से उधर एक स्टेटमेंट थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी कि लाइक एथिक्स हैज नो वैल्यू विदाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज हार्मफुल विदाउट एथिक्स। तो ये वाला पार्ट तो समझ में आ जाता है कि पॉलिटिक्स इज हार्मफुल विदाउट एथिक्स, बट एथिक्स हैज नो वैल्यू विदाउट पॉलिटिक्स, इस वाले को पार्ट पर सर अगर आप समझा सकें। ethics has no value without politics. हाँ, ऐसी एक स्टेटमेंट थी सर। ये अब स्टेटमेंट ethics has no value without politics. Of course, ethics become meaningful only when politics is being done. Why do you need ethics? Because human nature or human behavior seems to suggest that people who are in power do abuse power. So ethics only become necessary. What is ethics? Ethics is morality reduced to practical, behavior instructions. That's ethics. So bringing morality back is what philosophers have been fighting for all their lives. You know, Mahatma Gandhi was one of those जो morality के ऊपर ही जोर देते रहे. अब उनको लोग बुरा भी बहुत कहते हैं, उनसे गलतियां भी हुई. So here is a classical example of somebody saying that morality is superior to politics. जब पार्टीशन हुई और वो सारे मुसलमान जो इंडिया में है, कुछ लोग चाहते थे उन्हें निकाल दिया जाए, तो उन्होंने, गांधी जी ने मरण भरत किया कि आई वांट पटेल एंड नेहरू टू इंश्योर कि ये जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं अपनी खुशी से, वो सेफली रहेंगे और इक्वल राइट्स मिलेंगे. तो देखे ना महात्मा गांधी का फिर क्या हाल किया उन्होंने, जो इसमें बिलीव नहीं थे करते. सो हियर इज अ मैन ट्राइंग टू ब्रिंग मोरालिटी इनटू पॉलिटिक्स. अनदर example I can give you that Jawaharlal Nehru did not invest so heavily in building up the Indian armed forces. He thought India will become an ideal type of state which believes in peace, cooperation, and doesn't invest so much in war. But 1962, when
the war with China took place. That whole ideal came crumbling down. And now look at India. It is one of the major spenders in buying arms and in producing arms. So it's always a tussle between bringing ethics and morality into politics, and politics' own nature always looking for opportunities to violate morality and ethics. That is why you need a government whose authority is limited by law and rules and so on. इसीलिए कहते हैं ना सर, एक कारण और है सर कि एथिक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी पॉलिटिक्स के बगैर, क्योंकि सर आप एथिकली बिहेव करते रहेंगे, लेकिन अगर वो रेसिप्रोकेट नहीं होगी और रूल बेस्ड नहीं होगी तो सर फिर मतलब एडवांटेज हो जाए, मतलब लोग उनकी एडवांटेज ले लेंगे जो एथिकली बिहेव करेंगे। वो मैंने ये एग्जांपल ही दिए है ना, महात्मा गांधी का भी दे दिया, जवाहरलाल नेहरू का भी आपको दे दिया है कि वो मोरालिटी ला रहे थे, एथिक्स ला रहे थे, लेकिन दोनों के साथ जो हुआ वो तो आपके सामने ही है। When the Chinese did not respond in the same spirit, or India suffered a huge defeat, so Nehru got a nervous background and finally उन्हें stroke हुआ and he died. तो इस किस्म की चीजें अलबत्ता होनी चाहिए। बर्ट्रैंड रसल और ये जो ग्रेट थिंकर्स हैं, नोम चॉम्स्की और लोग, ये वही लोग हैं जो दे वांट morality to be at the basis of politics. But this is an ancient urge going actually beyond Plato and Aristotle and Socrates. ये तो उनके जमाने के जो स्टोइक्स हैं और जो वो schools हैं, they believed in this, in morality being the basis of human relations. लेकिन as we know, politics is the study of power. If you are in a position to give me orders, then obviously our relationship is not an equal one. And then it's a question, can your power be restrained by some rules? That's a different matter. सर, आपने एक और चीज मेंशन की थी ना कि मतलब इंडियन फिलॉसफी में क्या कॉन्सेप्ट होगा कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसको देखने का। तो सर उसमें यह है कि अल्टीमेट ट्रूथ तो है, लेकिन हमारे अराउंड ना मतलब माया कहते हैं उसे, मतलब वर्ल्ड का इतना जाल होता है कि इल्यूजन। जी सर, तो आपको जो है अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है टू सी बियॉन्ड इट, वो आइडिया है। ठीक है, तो ये वो प्लेटोनिक आइडिया ही है ना, जो जी वो सर, जो है वो जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स सर, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और वो केव वाली सिचुएशन। हाँ सर, द एलेगरी ऑफ द केव, वो पता है ना आपको? जी सर। हाँ। सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए सर, एलिगोरी ऑफ द केव, वो भी अच्छा है। एलेगरी ऑफ द केव, वो Plato tried to explain what he means by perfect knowledge and defective or limited knowledge. And he gives this allegory or a picture, a story, that there is a cave in which men and women are sitting stationary in one place and they are all chained. They can't move their necks in any direction. They only see in one direction. And what we see then is not all these people, but their shadows. Okay? So when they see the shadows and you are just looking straight, they believe that the shadows are the truth. But one of them, or let's say a few of them, manage to get out of that cave. And when they come out and they see light, then they realize what is the truth. But he said that this would only be possible for a few. तो ये है ना एलेगरी ऑफ द के फॉर्म्स जो हैं, हम तो फॉर्म्स ही देख रहे होते हैं, उनकी फॉर्म्स की जो है वो क्या कहते हैं, एक मैनिफेस्टेशन। फॉर्म्स जो है वो तो बाहर जाके जब आप वो नॉलेज आपको दुनिया का पता लग जाता है, देन यू नो कि ये रियलिटी है। लेकिन वो थियरी ऑफ फॉर्म्स बड़ी क्वेश्चनेबल है यार। वो ये है कि
there is a form of everything. There's a table which is corresponding to the perfect table, and there is, let's say, a bicycle on that we have, and there is a perfect bicycle, fine. But he says love and hatred also have perfect forms. Now, how do you go about finding them? Or Aristotle ne kaha कि it's the other way around. How do you arrive at a general concept? Only by looking at particular examples of it and then generalizing. कि कई tables अगर आप देखेंगे तो फिर आप कहेंगे, आप concept develop करेंगे कि ये table है. So it's from the particular to the general that you go. Plato believed that it is the general which exists up in heaven, of which we are trying to create imperfect copies in our own life, you know. So I think Aristotle once again is closer to the truth. सर ये जो हमने बात की, जो बात इंडियन फिलोसफी में कही जाती है वही प्लेटो भी कह रहा था सर. इसी से पता चलता है कि जो भी राइट थिंकिंग लोग हैं सर, वो दुनिया में किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी क्लास, कम्युनिटी, सेक्ट के, सर सेम ही बात करेंगे अगर ध्यान से सोचेंगे. एक ही बात करते हैं, बिल्कुल यही आज यही तो गुफ्तगू हमारी हो रही है. वो बिल्कुल यही बात करते हैं. इस्लामिक थॉट भी तो ये है ना, खास तौर पे जो शिया थ्योरी ऑफ इमामत है, यानी जो सुन्नी थ्योरी है, वो है कि प्रॉफिट मोहम्मद was the finest, most well informed. लेकिन वहां पे फिर भी है कि although they say that the prophet was protected from committing error, but in the Sunni narrative there are situations when the prophet seeks advice from others. Okay, लेकिन जो शिया थ्योरी है कि आफ्टर द प्रॉफिट जो इमाम है, अली की औलाद और ये और वो, they have perfect knowledge. So obeying them without questioning is a duty of all pious Shias. तो ये बिल्कुल वही सोच आ जाती है. सुन्नी सोच भी वही है, शिया सोच और स्ट्रॉन्ग तरीके से वही बात करती है. Why must the learned scholars of religion be obeyed? Because their knowledge is superior to rational or human knowledge. This riddle was dealt with by Imam Ghazali in the 12th century. He said that since God's knowledge is perfect, God cannot be in error. Whereas human beings, philosophers, scientists, whosoever, would never have perfect knowledge. Therefore, if there is a clash between the two, you should follow what revelation says, what God has spoken in the Quran or to the Prophet, and not go after the philosophers. And some of us think that this was a major setback to the development of free thought among Muslims, because 100 years later, but not in the center of Islam, far away in Seville, in Spain, Ibn Rushd, another philosopher, he came to the opposite conclusion. He said that if there is a clash between what the philosophers are saying and have discovered and that what the Quran teaches us, then interpret the Quran metaphorically, but follow the philosophers. And had Ibn Rushd thought, become the dominant idea, maybe the modern revolution and modernization and so on could have continued from the Muslims, but it did not. Instead, it became the stronghold of dogma. Revelation is superior to reason. This is the main argument. And Allama Iqbal in the 20th century also came to the same conclusion. So I say that among Muslims, there is no philosophy yet. It is still tied to theology. अब पता नहीं हिंदुओं के अंदर यूं है या नहीं है. आपके तो फ्री थिंकर्स हुए हैं ना, हमारे यहाँ फ्री थिंकर्स ऐसे एक पीरियड में हुए हैं, उसके बाद this thing has been always dominating
कि शरिया इज सुप्रीम, therefore it must be obeyed.